everyone. Greetings. I'm Sayukta from beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be keeping good health. Hair loss, whether it is hair loss in men or hair loss in women, is a very common biological problem all over the world, not just in India. The importance of hair in enhancing the overall personality of a human being cannot be underestimated. Hair is the first thing that people normally notices about you. A great hairstyle can give you the personality boost you require in doing well in both personal and professional fronts. Hair loss, on the other hand, can actually prove to be a real disadvantage for many people. Many young boys and girls start losing their hair early in life, caused by a variety of genetic, environmental, and systemic factors. Hair fall can affect anyone, everyone, regardless of their country of origin. Thankfully, effective hair treatment can control and even reverse the hair loss process. So, we are here to know more about hair loss, its management, and more in detail about hair care and how to manage hair loss. So, today, please join me in extending a warm welcome to our expert, Dr. Tanuja Tamhankar from Pune, to make us aware on hair fall and its management. Dr. Tanuja has been practicing dermatology, cosmetology for the last 15 years. She is a graduate from St. GS Medical College and Kim Hospital, Mumbai, and did her post-graduation in dermatology at Vijayanagar Institute of Medical Science in Karnataka. She is well versed with various cosmetic procedures involving lasers, scar revision, pigmentation, hair loss problems, facial sculpting with Botox and fillers, various anti-aging procedures, and dermatosurgery, including mold removal, earlobe repair, electrosurgery, nail surgery, etc., etc. She is one of the best dermatologists of Pune. She is the founder of Novo Grey Skin Clinic and Laser Center. This world-class clinic is set in a pristine locality and a one-stop specialty skin clinic to handle all types of dermatological, trichological, and aesthetic treatments. It's such a pleasure to have you with us, Dr. Tanuja. Very warm welcome to you. Thank you. Thank you. So, doctor, today we are going to talk about hair loss, hair fall. Now, hair fall is one thing that I'm sure no one can say that I never had hair fall. Yes, सबको होता actually. है, कम ज्यादा, लेकिन सबको होता है. First of all, I would like to know: is there a difference between these two terms, hair fall, hair loss? Is there a difference? Actually, as you rightly said, hair loss सबको होता है. Okay. Mhm. So hair loss होना सबसे पहली important चीज आपको जाननी है कि it's normal. तो हमारे hairs जो होते हैं actually अपने पूरे जीवन काल में whenever we are like whatever the lifespan is, उसमें 8 to 10 times उनका recycling होता है. So 8 to 10 times all the hairs will be recycled. So obviously if it is recycled, so hair will fall and new hair will come. Okay. The problem is when the number of hairs are falling more and the number of hairs which are coming is less, then the discrepancy happens, and then people notice that yeah, it's excessive hair fall. So if we say hair fall is normal. So many a times it is very important for us as clinicians to pacify the patient that hair fall तो होने ही वाला है, but अपने को क्या देखना है कि वो ज्यादा तो नहीं है, and that time we need intervention. Right. Now, as you very correctly said, that normally we, on a very routine basis, everyday basis, we see hair falling from our scalp. कभी हमें अपने कोम पे, कभी जब हेयर वॉश करते हैं तब, otherwise on our floors, etc. But as you said, it's normal to lose certain amount of hair on a regular basis, but we should get alarmed or, we should get concerned if it's more. तो वो जो डिफरेंस है, वो हम कैसे महसूस करें कि ये नॉर्मल है या ये अलार्मिंग है? ये कैसे समझें? So most important thing what you have to see is around what we say that is around 50 to 100 stands per day is quite normal for it varies upon season also, but around 50 to 100 hairs losing per day is okay for particular time, not always throughout the cycle, but for few days you can experience such kind of hair fall which usually settles by maybe in weeks or something like that. But if it is persistent, if it is falling a lot, if every time, every day you are losing your hair, and as well as you're finding that your hair are becoming thinner. Yeah, earlier what you used to have a big bulk of your hair that is getting thinner. Your hairline is receding. Your density wise, your hairs are. You see that your hairs have become thinner as compared to backward hairs. Then definitely that's an alarming sign, and you should always seek
medical help for that. All right. And now, talking about the reasons, the causes, what could be the causes for hair loss, doctor? So now looking at broadly, like the commonest causes, first is most important, it is telogen effluent. Okay, so Mhm. telogen effluent is a condition which everyone, it occurs to majority of people, and it is very normal to have telogen effluent. That can be due to many reasons, like if you are nutrition deficient, if your lifestyle is wrong, if your metabolic problem, if your environmental issues, stress induced, hormonal issues. So these are the few reasons where we call it as telogen effluent. In that kind of hair loss, what happens is your hair become, they're falling more and new hairs are coming less. So there is, we have, as we say, we have hairs, have three types of hairs what we have in our scalp, like anagen, telogen, and catagen. Anagen is the growing hair, which is growing. Telogen is the hair which is stopped growing but is still there in our scalp. And catagen is the falling phase. So why it is telogen effluent? Because many a times because of any stress in our body, it can be due to surgical cause, it can be a medical reason, it can be hormonal, it can be environmental, it can be stress also. So these any stressful situation for the body, so more number of hairs will go from anagen to telogen, and then they will start to fall after few months. So this telogen phase lasts for, so this hair cycle is disrupted, and that causes excessive hair fall, which we call it as telogen effluent. And it is a very common, especially seen in females after pregnancy, especially after surgeries, especially after some major illnesses like typhoid, TB, or even after COVID. COVID, we had a lot of patients coming up with telogen effluent. So these are these and deficiencies, which is one of the most, and in India, in females, one of the most important deficiency which occurs is iron deficiency, and which is causing a lot of hair fall. So these are the few factors which causes telogen effluent, and it is normal to have it. It is very easily manageable if we correct the environment. If we give a good support to the hair, the environment of the our body changes, we can regain the hair, and the patient is will be completely fine in maybe 6 months to 1 year. They will get back the density. Now there's another term which is called as androgenetic alopecia, which is like टक्कलपना, जैसे जो baldness Hmm. होती है, mainly in males में ज्यादा होती है, but nowadays it is there in females also. Females में after grade 2 only people do notice that, but definitely androgenetic alopecia, it is the kind of baldness which is there, and it is genetic. So this problem is genetic. You will be having some genetic predisposition for it, and then only you have got it. And what happens is that is a progressive thing. So the problem which were occurring earlier, like in 40s, which was normal. Like हम लोग का कैसे होता था कि एक मतलब baldness आ रहा है तो मतलब दो बच्चे हो गए, then they are like बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो this is a normal thing. Earlier, Right. that generation, that was normal. The same thing now it is occurring at 20s. Now the problem becomes the cosmesis, because लोगों की males की especially age ज्यादा दिखती है. So Hmm. it is all male aging is mainly upon their hair का aging. Okay, Hmm. so whatever their baldness level are, it depends the age of the person. So we have like a fixed criteria for that. Right. So people start to look more aged as compared to earlier self. Like जो भी होते हैं उसके हिसाब से वो ज्यादा aged दिखते हैं. So Hmm. that becomes a major problem. And then that this problem is now coming in 20s and 30s, and which is causing the main problem, which is genetic, which was earlier coming in 50s, now it is coming earlier, and then सारा अपना problem शुरू होता है. So that is endogenetic alopecia, which is mainly genetic, and ऊपर से if telogen effluent sets on that, then the problem becomes a more problematic area. So these are the two major 90% the bulk of patients which we see. Now other types are alopecias, they localize alopecia like alopecia areata, or they'll be after chemotherapy or after some drugs. So maybe these are the different other alopecias, but mainly what majority 90% of people which deals with is this androgenetic alopecia, the baldness, and the telogen effluent, which is the because of environmental factors. Right. Now, when it is genetic, when we know that there is a family history of baldness, right? तो हमेशा कहते हैं मेडिकल फील्ड में प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर.
Any way to Mhm. prevent it or any way to prolong it, delay it? I'd say there is prevent in the sense taking the treatment is one of the ways of we can prevent it or delay the progression. What I'll say in a better word. So I cannot do something which like the person will not get that problem. Okay. But what I can do is I can, with the help of drugs, with the help of treatment, I can delay the problem. So we can get back the hairs. So that, and if you have genetic history, definitely you should be careful. You should be more watchful. You have to assess. And the treatment duration is a long-term solution till you want your hairs. सो मेनी अ टाइम्स पेशेंट्स डू कम टू अस एंड दे से कि अभी उनके दिमाग में कैसा रहता है कि हाँ हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं 2-3 महीना 6 महीना ट्रीटमेंट करेंगे एंड देन आवर कंडीशन विल बी सॉल्व सो Hmm. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हम लोग को एम्फेसाइज करने पड़ता है पेशेंट को कि बाबा ये आई एम टॉकिंग ऑफ एंडोजेनेटिक एलोपेशिया हाँ बॉल्डनेस वाला प्रॉब्लम Hmm. कि दिस इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम विच विल स्टे विथ यू आई के वी कैन गिव यू कंट्रोल बट वी कैनॉट क्योर. Right. So there's difference between control and cure. So we have to always control the problem and we can delay it, as in the baldness, we can delay it by taking right treatment. Mhm. And that's why it's important to go and consult a dermat rather than, going for home remedies or over-the-counter products, etc., etc. But the reality stays is, doctor, I'm sure you will also agree with me. जब भी हमें लगता है एक तो ओवरनाइट नहीं होता कि एकदम से बाल कम हो गए हैं, बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, वो ग्रेजुअली होता है. और जैसा कि आपने कहा वो साइंस समझना ज़रूरी है कि अभी ये ज़्यादा हो रहा है, सो वी नीड टू बी कंसर्न, गो टेक द राइट एडवाइस फ्रॉम द राइट एक्सपर्ट व्हिच इज़ अ क्वालिफाइड डर्मैट. बट होता क्या है जब हमें लगता है कि अच्छा बाल झड़ने लग रहे हैं या ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो वी स्टार्ट विद होम रेमेडीज. दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, ऑयलिंग, शैम्पी, एटसेट्रा एटसेट्रा, हेयर मास्क, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन विल गो फॉर ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स. कोई भी प्रोडक्ट जो ये दावा करे कि हम हेयर फॉल कंट्रोल करते हैं, वी फॉल प्रे टू इट, तो हम वो ट्राई करने लगते हैं. देन नाउअडेज देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड दे हैव सो मेनी क्विक फिक्सेस फॉर ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स. तो हेयर्स के लिए, स्किन के लिए तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं एंड अगेन वी फॉल फॉर इट. तो उन्होंने जो कहा ये लगा लो, ये लगा लो, ये ड्रग यूज कर लो, ये कर लो, हम सब कर लेते हैं एंड बाय द टाइम वी रियलाइज कि अब जो है बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगी, दैट्स व्हेन वी गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. और तब पता चलता है कि अगर हम पहले ही आ गए होते तो शायद अभी तक थोड़ा हमने और अपने बालों को बचा लिया होता है. आई एम श्योर you also get patients who Yes, has yes. followed the same path. So what's your take on these home remedies, over the counter products, and what the influencers are saying, etc., etc.? Actually, I've already answered this question. Basically, क्या होता है ना nowadays because of the media and Instagram and all these influencers and all and the kind of advertisement it has been shown, so हम लोग को हंसी आती है. हंसी आती है क्योंकि देखा जाता है वो लोग ऐसे बोलते हैं 2 महीने में बाल ऐसे आ गए या फिर लाइक Mhm. दे शो बिफोर आफ्टर पिक्चर एंड वी नो दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. हम लोग बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके ऐसे रिजल्ट्स आते हैं 6 मंथ्स में 1 साल के बाद, है ना? सो सबसे इम्पोर्टेंट एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर कि वो रिजल्ट्स मेंटेन रहे. सो क्या रहता है द कंज्यूमर इज वेरी मच कंफ्यूज्ड. ओके. सो उसको कुछ तो दिखा, दिस इज अ नॉर्मल टेंडेंसी, उनको कुछ तो दिखा ये इस तेल से मिल रहा है अपने को, 1 महीना लगाएगा छोड़ देगा, उसके बाद फिर दूसरा कुछ तो दिखा दूसरा लगाएगा छोड़. सो एज यू राइटली सेड दे आर नॉट कंसिस्टेंटली फॉलोइंग अ प्लान. Mm. Okay, and because of that, their condition is getting progressed or they are getting frustrated कि अरे मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. I've Mm. like lost a lot of money also because these are not they are very costly stuff. Okay, Definitely. and home remedies तो I don't believe in that. Actually, we don't believe in that. So that is out of question. I'm talking of the stuff which is being promoted in social media or online. If you type hair, there will be like full list of things coming up. So most important thing for even this, I tell to my patients also, most important thing is first we should know what is the problem is. First we have to understand the problem. We know that problem is a long-term problem and definitely there is solution for that. Just because we don't have patience, it doesn't mean it doesn't have solution. There is solution. We have to sit down, we have to calm our mind, we have to go with a proper guided approach so that we are able to
able to get good results. So even for us, when we start treatment, if I tell my patients that अरे तुझे 1 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, उसको नहीं दिखा, the patient will be dissatisfied. So if हम्म, I counsel my patient कि बाबा 6 महीने रुक, 6 महीने अच्छे से यूज, compliance बढ़ा अपना, and then you will start to see result, then the patient will be like be more he knows that अरे 6 महीने तक तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, उसके बाद ही मुझको एग्जैक्टली। रिजल्ट आने वाला है. सो ही इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, सो दैट फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट कम. उसके लिए वी हैव टू काउंसल द पेशेंट, सो पेशेंट अदरवाइज काउंसलिंग. वो एक विशियस सर्कल बन जाएगा, जैसे आपने कहा स्ट्रेस आल्सो लीड्स टू हेयर फॉल और अरे एक्सेसिव वो हेयर तो लॉस। आप मैं आपको बता रही हूँ, इट इज लाइक दैट, वो बाल गिर रहा है, उसका स्ट्रेस आता है और उसकी वजह से और बाल गिरते हैं. सो आई फर्स्ट नो। थिंग आई टेल माय पेशेंट इज कि अरे जो बाल गिर रहा है, डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ दैट, लेट मी टेक द स्ट्रेस ऑफ योर फॉलिंग हेयर. You just ignore that and just start the treatment. Stay with me for a few months and then you will get good results, and definitely they get results. राइट। अच्छा, जैसे हमने ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स की बात की, एक और चीज़ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है वो है सप्लीमेंट्स। और हाँ. इतने सप्लीमेंट्स ओवर द काउंटर अवेलेबल है जो ये दावा करते हैं कि यू हैव दीज पिल्स फॉर 60 डेज और दीज सप्लीमेंट्स फॉर 60 डेज एंड यू विल गेट गुड हेयर एटसेट्रा। अगेन आपने भी बोला इनिशियली दैट डाइट डू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग योर हेयर। गुड हेयर हेल्थ के लिए डाइट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सप्लीमेंट्स वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के ओवर द काउंटर, क्योंकि सबको पता है अच्छा बाल झड़े बायोटिन ले लो, जिंक की प्रॉब्लम होगी, आयरन डेफिशिएंसी होगी, वी जस्ट गो एंड गेट देम। और आजकल तो इतने अच्छे से वो ब्रांड एंड प्रमोट किए जा रहे हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दीज अगेन? So basically कैसा रहता है, when you are meeting a clinician, when you are meeting a person who is like qualified enough, that person will usually, हम लोग एक blood test करते हैं, we see कि क्या चीज कम है क्या ज्यादा है, and जितना adequate है उतना ही देते हैं. So excess of anything is bad. So excessively अगर आप supplements भी लोगे तो आपको body में आपको ही तकलीफ होगा. So what we have designed, I have designed a product where I'm giving small dosages of everything which covers everything for hair growth, and so that I can give it for a longer period of time. So उसमें में भी ऐसा होता है कि दवाइयाँ अलग-अलग टाइप की दवाइयाँ बहुत सारी आ जाती हैं, बट वो हम लोग कम डोज में देते हैं, और वी ट्राई कि वो वंस इन अ वीक वगैरह हो, सो दैट कि तब तक अपने रिसेप्टर्स, अपने जो बॉडी अपनी किस तरह से काम करती है कि हर किसी को अपटेक के लिए रिसेप्टर्स रहते हैं. सो वो रिसेप्टर का अपटेक कब होता है, जब वो मतलब जब उसको लगे वो खाली हो. जब हर चीज भरी रहेगी, बार बार हम लोग बहुत ज्यादा खाएंगे, तो रिसेप्टर्स वो उसको लेगा ही नहीं, एंड देन इट विल बी यूजलेस. अननेसेसरी उसका मतलब टॉक्सिसिटी होगी, या फिर अपना गट का एनवायरनमेंट खराब होगा. तो उसकी बजाय इफ वी फॉलो अ प्रॉपर प्लान वेयर वी आर having everything but in small dosage, in not in therapeutic dose but in sub-therapeutic dose, which is important for your hair health, so we can have it for a long term. That is the most important. So जब हम long term के लिए लेंगे ना, तब उसका फायदा है. बिल्कुल, और इसके लिए अगेन बहुत ज़रूरी है कि हम एक डॉक्टर के पास जाएँ, और जब हमें पता चलेगा आफ्टर द टेस्ट एटसेट्रा कि हमें कोई कमी है, कोई विटामिन न्यूट्रिएंट जिसकी कमी है और डॉक्टर वो देंगे तब वो वर्क करेगा, अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मार्केटिंग होती है, मार्केट गिमिक होता है, ये एक जनरलाइज़्ड अप्रोच पे चलता है। उनको लगता है सबको ही बायोटीन डेफिशिएंसी है, सब खा लें। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सिर्फ़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो आपके लिए होता है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ होता है, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही जगह जाएँ। हेयर And लॉस especially पर diet also, as you said na, diet also plays a very good role. यस So diet. एग्जैक्टली, आई वाज कमिंग ऑन दैट डॉक्टर कि अब जब हम सप्लीमेंट्स की बात कर चुके हैं, डाइट में हम क्या ले सकते हैं, कैसे अपने हेयर को हेल्दी रखें। एंड खास तौर पे ये जो मौसम है, ऐसे कहते हैं बहुत अच्छा खाने पीने का मौसम है ठंड में नॉर्मली, एक तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और अच्छे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब मार्केट में मिलते हैं, तो अभी किस तरह से हम क्या क्या स्टॉक अप कर सकते हैं? कि कैसा है डाइट का, इफ यू सी ग्रॉसली, इफ यू सी इट शुड बी अ हेल्दी डाइट. सो बाकी का सप्लीमेंट्स तो हम लोग आपको दे ही देंगे जो कम होगा, बट हेल्दी डाइट का मतलब क्या होता है, द पोर्शन ऑफ योर पर्टिकुलर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक हम्म, प्रोटीन. इफ यू से इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है, सो अराउंड इफ यू कैन मेंटेन अ 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट का प्रोटीन इंटेक, सो उसमें इफ यू आर मेंटेनिंग दैट, तो मेजोरिटी आपके विटामिन्स वगैरह आ जाते हैं, दैट बिकम्स वन थिंग.
गुड फैट्स, हेल्दी फैट्स खाना चाहिए। हेल्दी फैट्स में लाइक कोकोनट, नट्स के, ऑलिव ऑयल। सो दीज़ आर फ्यू सोर्स, या फिश इफ यू आर टेकिंग, फ्लैक्स सीड्स। सो दीज़ आर हेल्दी ऑयल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर हेयर आल्सो। एंड ये 2 चीज़ें हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स यू कैन मैनेज डिपेंडिंग अपॉन योर डाइट थिंग, लाइक अगर आप हुँ, बहुत वेट मैनेजमेंट में रहेंगे तो यू हैव टू मैनेज योर कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट वेरी एसेंशियल काइंड ऑफ थिंग, बट डेफिनिटली carbs, your protein and your fats you have to manage, along with that micronutrients. Micronutrients कहाँ से आएंगे? अपने nuts से आएंगे, अपने leafy vegetables से आएंगे, fruit से आएंगे। So this should be your major thing. एक अच्छा fiber, अच्छा protein, good fats। अगर अच्छे से खा रहे हो, your gut will be good because there is a connection between the hormonal balance and the gut. Okay, there हुँ, is कि किस तरह से बैक्टीरिया आपके गट में है will decide कि आपके hormones कैसे होंगे। hormones कैसे होंगे will decide आपकी बॉडी कैसे होगी, इंक्लूडिंग योर हेयर्स एंड स्किन। सो हुँ। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं, सो यू हैव टू डेफिनेटली मैनेज दैट। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा हमने बात की कि किस तरह से डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल ज़्यादातर लोग एक पर्टिकुलर फ्रेम में फिट होना चाहते हैं, तो दे हैव अ पर्टिकुलर फिगर टाइप फॉर देमसेल्व्स एंड उसके लिए टू अचीव दैट टारगेट दे विल गो ऑन क्रैश डाइट्स, दे विल गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग्स। कई बार तो बिना डॉक्टरी सलाह के या बिना किसी प्रॉपर डायटीशियंस एक्सेट्रा से एडवाइस लिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देते हैं, क्रैश डाइट्स शुरू कर देते हैं एंड इससे कई बार रिजल्ट्स ये मिलते हैं कि शायद उस एक फ्रेम में तो हम फिट हो गए लेकिन बाल हमारे बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो किस तरह से वो बैलेंस बनाएँ? जी, देखिए मैंने जैसे पहले आपको बोला लाइक कि एनी स्ट्रेस फॉर द बॉडी, सो इफ यू हुँ, आर लूजिंग योर वेट इट्स अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी। सो हुँ, देन योर हेयर विल गो फॉर टिलोजेनिक फ्लो, जो मैंने हुँ, फर्स्ट कंडीशन आपको बताई थी, जो मेजॉरिटी लोगों को बाल गिरने का जो मेजर इशू होता है। हुँ, सो लूजिंग वेट फॉर बॉडी इज अ स्ट्रेस। ओके, येस। इट्स अ फिजिकल स्ट्रेस। सो दैट इन दैट एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि व्हेन यू आर इन अ थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव डाइट, तो आपके न्यूट्रिएंट्स आपको प्रॉपर नहीं मिलते जो अपने को मिलने चाहिए फॉर द प्रॉपर हेयर इन्वायरमेंट, जो अपने को चाहिए रहता है वो नहीं मिलता है, देन प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। सो ये दोनों में सॉरी येस। अबाउट दैट, बॉडी गोज फॉर टिलोजन इफ्लुएंस एंड बाल गिरना शुरू हो जाता है। सो वी हैव टू डेफिनेटली सी टू दैट। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा एक और क्योंकि आजकल Even if you are losing weight, it has to be a slow and gradual process, not a acute thing. राइट, राइट, राइट। सो एक और चीज़ है आजकल देखने को मिलती है कि हमें से ज़्यादातर लोग अपने वर्जिन हेयर नहीं रखते। ईदर विल गो फॉर रिबाउंडिंग, स्ट्रेटनिंग, देयर आर सो मेनी थिंग्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स बेसिकली। और केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद कई बार देखने में मिलता है कि तब तो नहीं इमीडिएटली लेकिन उसके 1-2 महीने बाद कि बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। ऐसे में क्या करें? क्या बिल्कुल केमिकल ट्रीटमेंट्स नहीं कराएँ और आर दे ऑफ एनी यूज़ क्योंकि बोटॉक्स ट्रीटमेंट, केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट के नाम पर भी कई सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके बाद भी बाल झड़ते हैं। तो क्या करें? See, if it is depend. This is a very hairs are meant for is a cosmetic organ. Okay, हुँ, so they are especially head hairs now. They have a lot of cosmesis value. So if it is essential, definitely you will have to. But if you are facing some issues like hair fall का already issue है, then don't go for it. हुँ, Usually I tell my patients, so अगर you are suffering from hair loss, if you have androgenetic alopecia, balding वाला alopecia है, then don't go for all your treatment. अगर if everything is okay, सब कुछ ठीक है, then and it is necessary for you, क्योंकि definitely chemical treatment से बाल झड़ते हैं, because it's again it's a stressor for the hair, हुँ, है ना? So heat हो गया, chemical हो गया, so this causes a stressor and hairs go for telogen. Okay, to prevent that you have to prevent the treatment, but sometimes it's very essential for person, क्योंकि वो जरूरी होता है for their work and everything. So राइट, you can go for it if your hair health is good, if you're not losing hairs, if you are not having other problems like pattern hair loss या फिर androgenetic alopecia, ये हुँ, नहीं हुँ, है, then you can definitely go for it.
एंड अगर उसकी वजह से हेयर फॉल इंड्यूस हो रहा है, देन उसके बाद फिर यू हैव टू मीट अ डॉक्टर एंड देन गेट इट करेक्टेड, मतलब उसको हेयर फॉल को रुकवाने के लिए वी हैव टू टेक मेजर्स फॉर दैट। डैंड्रफ तो पर भी हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर, हाँ, बिकॉज डैंड्रफ अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हम्म, इस सीजन में भी बहुत से लोग हैं जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं। कई लोगों को लगता है कि खूब सारा तेल लगाओ, तेल लगा के बालों में छोड़ दो तो डैंड्रफ नहीं होगा, इट्स जस्ट द ड्राई स्कैल्प व्हिच इज बॉदरिंग, तो आप पूरे टाइम तेल लगा के रहो तो नहीं होगा। Anyways, we have this tradition in our society of, oiling our hair, scalp, and keeping it on our scalp for long, long durations. So, dandruff क्या है, क्यों होता है, कैसे इससे बचे, कैसे इसको ट्रीट करें? okay, so basically dandruff is seborrheic dermatitis. It is basically हमारे बॉडी में seborrheic glands रहते हैं, okay, जो कि sebum secrete करते हैं, okay. So glands में से sebum निकलता है which gives the oiliness to the skin, especially वो अपने चेहरे में, chest में, shoulders में, back में और scalp में रहता है. So these are the glands which are secreting the sebum. अभी वो sebum से क्या होता है? सीबम से एक टाइप का फंगस होता है जिसको मैलेजीजिया पर्पर कहते हैं, एंड दैट फंगस का प्रोलिफरेशन होता है एंड दैट गिव्स द डैंड्रफ का स्केलीनेस एंड एवरीथिंग. दिस इज लाइक वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड समटाइम्स इट इज एग्जैजरेटेड फिजियोलॉजिकल थिंग कि क्योंकि वो सीबम होना इज नॉर्मल एट अ पर्टिकुलर एज, लाइक वो अर्ली 20s या 30s तक यूजुअली ये प्रॉब्लम रहता है, बाद में वो सेटल हो जाता है जब हार्मोनल बैलेंस बैठा नहीं रहता है. तो एक बार हार्मोनल बैलेंस बैठ जाता है तो ये सीबम का सिक्रीशन भी बंद हो जाता है, कम हो जाता है, एंड डैंड्रफ का इशू भी सेटल हो जाता है. तो फॉर फ्यू इयर्स यू विल हैव दैट डैंड्रफ का प्रॉब्लम. सो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग हमने को क्या करना है कि सीबम कम करना है, एंड वो जो ऑर्गेनिज्म है, जो फंगस है, उसका प्रोलिफरेशन कम करना है, व्हिच कैन बी इजीली डन बाय एंटी डैंड्रफ शैम्पूज लाइक कीटोकेनाजोल बेस्ड शैम्पूज रहते हैं, वो वी हैव टू यूज, एंड उससे मेजॉरिटी लोगों का कंट्रोल में आ जाता है. एंड देन सीबम कम करने के लिए यू हैव टू वॉश योर हेयर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. बेसिकली ऑयलीनेस वगैरह मेंटेन, अभी ऑयल लगा के ऑलरेडी वो सीबम ऑयल जैसा ही रहता है, सो ऑयल ऑयल और ऑयल किया तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इसलिए वी हैव टू सेटल दैट. तो इतना ही अपने को करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है. यू हैव टू मे बी मोर फ्रीक्वेंटली यू हैव टू वॉश योर हेयर एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इंडिविजुअल जिसको डैंड्रफ नहीं है, एंड वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, एंड देन यूजुअली इट इट टेक्स टाइम. मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो फ्यू इयर्स तक रहता है, सो यू हैव टू गिव दैट टाइम टू योरसेल्फ. अरे जा क्यों नहीं रहे, जा क्यों ऐसे सोचना नहीं है. वो बस अपना काम करते रहना है कि बीच बीच में वो शैम्पू यूज कर लो जिससे कि फंगस ना हो, और अपने हेयर वॉश करते रहो जिससे कि सीबम कलेक्ट ना हो. बस उतना ही करना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये सिर्फ नॉर्मल डैंड्रफ तक सीमित है. Sometimes this same problem, seborrheic dermatitis, it shows skin के manifestations. Like हम लोग को खुजली आने लगती है, रैश आते हैं, पैचेस आते हैं, चेहरे पे आते हैं, कान के पीछे Right. आते हैं, मुंह के इधर आते हैं, फोरहेड पे, चेस्ट पे आ सकते हैं, बैक पे आ सकते हैं. तो तब हमको वी हैव टू मीट डॉक्टर एंड देन वी हैव टू सी, मतलब उसके लिए लोशंस वगैरह आते हैं, वी हैव टू कीप इट अंडर कंट्रोल, या कभी कभी सिस्टमिक टैबलेट्स भी देनी पड़ती है, तो दैट वी हैव. सो इसका भी जो नॉर्मल डैंड्रफ जो लोग बोलते हैं, इट इज द वेरी माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ seborrheic dermatitis which is very मतलब कैन बी इजीली ट्रीटेड, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं आता है. बिल्कुल। जब एक पेशेंट आपके पास आता है कि उसको हेयर लॉस हो रहा है, तो किस तरह से आप डायग्नोसिस के लिए भी कुछ करना पड़ता है क्या, कि क्या रीज़न होगा, क्या रूट कॉज़ होगा? आपने कहा कई बार आप ब्लड टेस्ट भी, एक जनरल ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। सो क्या-क्या करते हैं आप लोग? Usually, whenever patient comes, fellow detailed history we have to take. Then, along with that hair pull test, how many hairs it's falling, we have to see that to check whether it is telogen phloem or not. And we have to dermatoscopy, trichoscopy वगैरह करनी पड़ती है. We have to see the strand, we have to analyze the strand. So this is the clinical side. Along with that, we have to do few blood tests which we do to understand. So majority of times, many of times it is a easy diagnosis. The diagnosis is not an issue. Only problem comes where compliance, like if people counseling and compliance. These are the two things. So we have to counsel the patient. We have to start the right treatment, and then we have to make sure the patient is taking the treatment. If the patient is not taking the treatment and ignoring that, then it becomes difficult. Otherwise, hair issues are like easily treatable. Just we need to be patient. That is most important because it will take time. डेफिनिटली। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या-क्या है डॉक्टर? Treatment option. Now coming to the treatment option, first we have to diagnose the problem.
Okay, Hmm. that we did various tests and all, we will diagnose the problem. And along, because according to the diagnosis, we have to treat. Majority of times, we have to create a right environment for the hair. So we have to give supplements, right supplements, basically, nutritional treatments. Then depend if it is, there are many serums available. Okay, that we have to start. There are many medicine, minoxidil and other drugs are there that we have to start. If we have to assess the each and every patient's behave in a different way. If how we have to see the problem, mainly the diagnosis, if it is androgenetic alopecia, then along with normal medical treatment, we have to give some treatments like PRP or injections, stem cells treatment. So all these treatment we have to give. There's a treatment called this low laser light treatment, where there's a laser lights are given to the scalp so that the hair fall reduces. That we can start. And at last, if nothing, if it is grade is very high and patient wants good result, then we can go for transplantation also. Okay. Hair transplantation पर भी we would like you to shed some more light, doctor. कौन कौन कर सकता है? किस तरह से किया जा सकता है? क्या कोई further complications होते हैं? So it's a very broad topic actually. So I'll just wind it up saying that hair transplant is one thing. Patients को एक चीज understand करनी चाहिए कि hair transplant is a substitute treatment. It's a adjuvant treatment. It is not the main treatment. And why I'm saying that, because अपने like if we see our scalp, if we have around few lakhs hair in our scalp, and with transplant, what we are transplanting is few thousands. Okay, so imagine a few thousands versus lakhs. Right. So first thing is medical treatment we have to start, and if we want to design a particular look, if the person is getting bald from front side, for example, I'm saying, and we can go for hair transplant, but along with that we need to give him proper medical treatment also, because that person will be losing other hair. The transplanted hair will stay, they Hmm. won't go. But if the person is, after few years, if the person is losing normal hair, then the result will not be seen. Getting it? So transplant is it's a, what I say, is adjuvant treatment for correction. Correction of particular kind of hair ka line, hairline managing, giving density to the hair. We can do that. And there are many procedures for that, like FUE, FUT, where a single follicles are being transplanted, or we are taking a strip and then we are there will be scarred wala transplant, without scar wala transplant. So there are many approaches how we are approaching the transplant. But I want to clear one doubt, one thing in a patient's mind which they have, कि अरे हम लोग ट्रीटमेंट कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रांसप्लांट करा लेंगे, तो उससे नहीं काम चलता है. नहीं होगा, हाँ. You have to take the treatment, because it is very important for us to make sure that your normal hair stays and new hairs also come, so that your transplant ka hair will look better. So it is just an adjuvant. We are just giving a little hairs everywhere, so that along with that तुम्हारे normal hairs भी अगर आते हैं वहां पे, तो वो अच्छे दिखे और अच्छे better दिखे उसके. राइट. हेयर केयर को लेकर भी लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें, कब हेयर वॉश करें, क्या सिर्फ हेयर वॉश या हेयर कंडीशनर ही सफिशिएंट है, और वी नीड अदर स्टफ्स एज वेल. सो व्हाट शुड बी अ बेसिक हेयर केयर रूटीन फॉर अ हेल्दी हेयर? या सो एक हेयर केयर रूटीन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है ऑयलिंग ऑफ हेयर्स के ऊपर आता है कि हम्म. ऑयलिंग अच्छी है कि खराब है. आई कीप इट दैट वे. कुछ कुछ लोगों को लगता है कि बहुत सारे ऑयल्स मिलते हैं जिससे हेयर ग्रोथ होती है, या फिर कुछ कुछ ऑयल्स मिलते हैं जिससे हेयर फॉल कम होता है. सो नथिंग लाइक दैट. जस्ट क्लियर दैट थिंग आउट ऑफ योर माइंड. ओनली थिंग इज ऑयल से क्या होता है, कंडीशनिंग. जैसे कि हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं अपने चेहरे पे. So if you are oiling your hair, it is like a conditioning of the hair strand. Nothing more than that. Few people वो मसाज वगैरह करते हैं तो they feel good. It's just like normal body massage के वैसे head massage हो गया तो उससे अच्छा लग रहा है. But हम्म. apart from that, hair oil will not change your hair का environment there. It will just give a moisture to your. It's just a moisturizer for your hair. So if you want a good conditioning of the hair, for that like half an hour also before you take bath,
हेड बाथ, उसके पहले आपने लगाया एंड देन वॉश कर दिया, दैट विल बी इनफ, बिकॉज नाउडेज ऑयली हेयर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल कॉस्मेटिकली। सो Hmm. बहुत से लोगों को उसका गिल्ट रहता है, अरे मैं हेयर हेयर ऑयल नहीं लगा रही हूँ, इसकी वजह से मेरे बाल गिर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम पेशेंट्स, सो आई एम जस्ट क्लियरिंग द डाउट फ्रॉम देयर माइंड। तो ऐसा कुछ नहीं है। सो इवन इफ यू आर नॉट ऑयलिंग योर हेयर, इट इज ओके। Now to coming to the second thing, hair care, how many times you have to wash your hair, it's individualized. As I said earlier, किसी किसी को seborrheic dermatitis, dandruff का problem होता है, तो वैसे लोगों को definitely they have to frequently wash their hair. Sometimes patients have to wash their hair daily also, because इतना ज़्यादा sebum होता है कि उससे फिर खुजली आने लगती है, and then fungal infection proliferate होता है. So Right. it is a individualized thing. Definitely अगर आपका hair fall ज़्यादा हो रहा है, तो hair जो गिरने वाला है वो गिरने ही वाला है। तो Hmm. हेयर मतलब हाँ, ये होता है कि हेयर वॉश के टाइम पे ज़्यादा गिर जाते हैं, बट जो हेयर रुकने वाला है वो रुकने वाला है। सो बहुत बार पेशेंट लोग हेयर वॉश ही नहीं करते, वो डर में कि बाल गिरेंगे। हेयर वॉश से बाल गिर रहे हैं इसलिए वॉश नहीं कर रहे हैं। Hmm. सो आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट डाउट कि जो गिरने वाला है वो गिरने ही वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आइडियली इफ वी से इन अ नॉर्मल सिचुएशन, एक ट्वाइस टू alternate days as in washing hairs is totally okay. Daily wash, daily shampoo करना, at least females के लिए it becomes difficult. बाल सुखाना and other things. Hmm. Males can definitely wash daily also, no issues with them. उनको बहुत sebum रहता है because of the androgens. So even if they are washing their hairs daily, वो भी चलेगा. Only thing is shampooing दिन में हफ्ते में 3 बार कर दो. So उस तरह से you can definitely manage, and it's not मतलब there's no fixed rule कि ऐसे रूल बुक नहीं है कि इतना ऐसे करना है. It's totally individualized. Right. Some viewers are here with their questions. Purvi Mehra is here. Her question is, how often should I get a haircut for healthy hair growth? Hair cut. Basically कैसे रहता है, after 3 to 6 months, if your hair health as a nutritionally they are deficient and hormonal issues रहेंगे वगैरह, तो split ends वगैरह आ जाते हैं, तो cut that like 3 to 6 monthly, you can definitely go for it. Every monthly वगैरह करने की जरूरत नहीं है. And if everything is good, if your lifestyle is good and your hairs are growing nicely वगैरह, so it's individual. But if you cut it like 3 to 6 monthly, it's totally okay. That's okay. Okay. Um, do different hair types require different hair care routines? Feroz Khan का question है. Yes, definitely. If your hairs are drier, if you're frizzy रहते हैं, if you need more moisturization, then definitely you have to go for more conditioning of your hair. So usually जो wash के बाद ही conditioning होता है. And if your hair already moisturized, then definitely you can go for like once a week or twice in a week का, या फिर कुछ लोगों को बिना head wash किए बालों में वो like बोलते हैं ना bounce, या फिर जो उनको अच्छा लगता है Hmm. वो नहीं Hmm. आता है. So they have to डू दैट डेली ऑल्सो. शैम्पूइंग डेली करना पड़ता है. बहुत से लोग कुछ लोग लगाते रहते हैं, मेकअप का होता है या बाकी Hmm. दवाइयाँ होती हैं, तो देन दैट टाइम दे हैव टू वॉश देयर. सो एवरीथिंग इज नॉट अ फिक्स रूल फॉर पर्टिकुलर पर्सन. हाँ, इट्स लाइक right. ऐसा नहीं रहता कि सब लोग को एक फिक्स रूल ही रहेगा. वो Hmm. इंडिविजुअलाइज ही रहता है. Suhana Thakur का question है, does my hair care routine need to change with seasons? Yes. Yes. Okay. So the hairs, according to seasons, your skin is changing, your hairs are changing. So definitely hair care routine सीजन के साथ चेंज होता है. ठंडियों में थोड़े ड्राई फ्रिजी रहते हैं, थोड़ा हेयर फॉल भी ज्यादा होता है. एंड जो लाइक नॉर्मल बाकी के सीजन होते हैं तब थोड़ा सा जब पसीना ज्यादा आता है तो फंगल Hmm. इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा होती हैं. अदरवाइज सीजनल वेरिएशन ये होगा कि लाइक बहुत ठंडी है आपकी जगह में, तो आप ऑब्वियसली हेड बात नहीं करोगे. सो दैट चेंजेस डेफिनेटली आर देयर. सो डेफिनेटली यस, सीजन के साथ यू हैव टू चेंज योर हेयर केयर रूटीन. Okay. And before we wind up the whole session, doctor, any take-home message for our viewers? Take home message, I'll say first thing, as in if you really experiencing hair fall, then meet the doctor, consult your problem, and form a long-term solution. Usually, hair loss, if it is there, takes 6 to 1 year for the treatment. So have patience for so much time, because our job doesn't stop when your hairs are falling. Just to prevent, make your hair doesn't fall, is not our work. Our work is your density should be maintained. So whatever hairs have fallen, they have to come back, and that takes around a year.
So we have to give treatment for a year. So please be compliant and have patience. And don't take stress of the falling hair whenever it's falling. So Right. Thank you so very much, Dr. Tanuja, for your valuable time. It has been a very informative session for our viewers, and we really look forward for many more such sessions in the coming times with you. definitely, definitely. Thank you. Thank you so Thank very you. much. And viewers, thank you for your excellent participation in today's session. Stay healthy, stay happy, stay spotless, and keep following us. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye.